అంతస్తులోనూ అవకాశంలోనూ సమానత్వంలో చేకూర్చుటకు ఈ స్ఫూర్తితో మీ ముందుకు ఈ బడ్జెట్తో వచ్చాం. తెలంగాణ త్యాగమూర్తులు ఏ ఆశయాల కోసం ఆత్మార్పణ చేశారో వాటిని సాధించడం కోసం, వారి కలలను సాకారం చేయడం కోసం, వాటిని ఆచరణలోకి తీసుకొని రావటం కోసం ఈ సమావేశాల్లో మా కార్యాచరణ మీ ముందు ఉంచబోతున్నాం. కొందరి కోసం మాత్రమే అందరూ బతకాలి అనే నిరంకుశ విధానాలను ఎదిరించిన తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పుడు నిజమైన అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తున్నారు. అందరి కోసం మనమందరం అనే నూతన స్ఫూర్తితో మన చిరకాల ఆశలు, ఆకాంక్షలు తీర్చుకోవటానికి ఇప్పుడు సరైన వేదిక ఏర్పాటైందన్న భావన కూడా తెలంగాణ ప్రజల కళ్ళల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఎందరో యువకుల త్యాగాల పునాదులపై ఏర్పడిన తెలంగాణ 10 ఏళ్ల తర్వాత నిజమైన ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటో రుచి చూస్తున్నది. ఈ నేపథ్యంలో మనం ఈ స్వేచ్ఛ తెలంగాణలో తొలి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టుకోవడం ఎంతో ఆనందకరమైన విషయం. సమాన అవకాశాలు, సామాజిక న్యాయం, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే పాలనకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. రైతులు, యువకులు, మహిళలు, నిరుపేదల జీవితాల్లో మరిన్ని వెలుగులు నింపేందుకు పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. మీ నమ్మకాలు మీ ఆలోచనలు అవుతాయి, మీ ఆలోచనలు మీ పదాలు అవుతాయి, మీ మాటలు మీ చర్యలు అవుతాయి, మీ చర్యలు మీ అలవాట్లుగా మారుతాయి, మీ అలవాట్లు మీ విలువలు అవుతాయి, మీ విలువలు మీ విధిగా మారతాయి అంటూ జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నాను. తెలంగాణ ప్రజల జీవితాల్లో గుణాత్మక మార్పు తీసుకురావాలనేది మా కృతనిశ్చయం. అందుకు అనుగుణంగా మా హామీలు ఉండటం వల్లనే తెలంగాణ ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మారు. ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకోవటానికి ఈ ప్రజాప్రభుత్వం ఎంతటి సాహసాన్నైనా చేస్తుంది, ఎంతటి కష్టాన్నైనా భరిస్తుంది. ప్రజలకు నిజమైన ప్రతినిధులుగా మేము ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉన్నాం. పాలకులకు ప్రజలకు మధ్య ఉన్న ఇనుప కంచెలు తొలగించడంతో ప్రారంభమైన మా ఈ ప్రజాపాలన మరింత పటిష్టంగా ముందుకు సాగుతుందనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నిస్సహాయులకి సహాయం చేయడమే మా విధానం, ఇదే మా లక్ష్యం. తెలంగాణ ప్రజల దశాబ్దాల ఆకాంక్షను గౌరవిస్తూ 2014లో ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసిన నాటి యూపీఏ ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషించిన నాటి యూపీఏ చైర్పర్సన్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి మరియు నాటి ప్రధాని డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారికి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవటం మా కర్తవ్యం మరియు మనందరి బాధ్యత. స్వరాష్ట్రం కోసం ప్రాణాలు మరొకసారి సభావేదికగా నివాళులు అర్పిస్తున్నాం. కేవలం లాంఛనంగా మాత్రమే నేను ఇది చెప్పటం లేదు, మనస్సాక్షిగా చెప్తున్న మాట ఇది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, నేను, మా మంత్రివర్గ సహచరులు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు తీర్చడానికి ఏమాత్రం వెనుకాడము. ఇటీవల ముగిసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల సందర్భంగా తెలంగాణలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం తెస్తామని మాటిచ్చాం. నిర్బంధాలు, నియంతృత్వ ధోరణులు ఉండవని చెప్పాం. ప్రజా సంక్షేమం కోసం 6 గ్యారంటీలు ప్రకటించాం.
బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే ఇచ్చిన హామీలు చెప్పిన మాటకు కట్టుబడి హామీలకు చట్టబద్ధత కల్పించే ఫైలుపై గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు తొలి సంతకం చేయటం మా ప్రభుత్వ సంకల్పానికి చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం. నూతన ప్రభుత్వం తొలి అడుగులోనే సంక్షేమానికి నాంది పలికింది. ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి మాటకు బడ్జెట్ సమావేశానికి స్వాగతం. మార్పును కోరుతూ స్వేచ్ఛ సాధించుకున్న తెలంగాణ ప్రజానికానికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తున్నాం. భారత రాజ్యాంగ పీఠిక గుర్తు చేసుకుంటూ Whenever people discuss India, they talk about the medieval history of India. The ancient history is forgotten. Today in Delhi, we see all kinds of roads, and till recently there was Aurangzeb road as well. But there is no Harshavardhan road. There is no Chandragupta Maurya road. Why? There is no Samudragupta road. There is no Mahaji Shinde road. Why? यहाँ गुड़गांव में रहने वाला एक 7वीं कक्षा का बच्चा, he was the youngest person to depose before a parliamentary standing committee. And he said that we have been fed to learn about Akbar and Aurangzeb in so many paragraphs. And about Rana Pratap, there are just 4 lines, and Chhatrapati Shivaji, just 5 lines. History requires to be revisited. And in the history, you will come across several such examples where history has been revisited. This revisiting, reassessment, re-evaluation is a part of our scholarship in a way. इन लोगों को पता नहीं कि ये सनातन का मतलब ही शाश्वत है. The literal meaning of Sanatan is eternal. तो सनातन कोई केवल एक उपासना पद्धति का नाम थोड़ा ही है. Whatever is eternal in this world, it's Sanatan. No part of Indian culture is divisive. We are always integrationist. Narrative चलाने वाले जितने सारे सोशल मीडिया है, वो भी तो एक दृष्टि से अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में है. आज वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस पद्धति से भारत की एक छवि बनाते हैं और जो वास्तविकता है, इसमें बहुत अंतर है. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Thank you for liking or subscribing to the channel and for sharing with those who you think will benefit from these conversations. Today our conversation is about soft power. Does India exercise its soft power? Does India do enough to spread awareness about its heritage, about its culture? How does it benefit a country? It helps in building consensus about Indian political values, foreign policy and culture. Usually developed countries are able to exercise their hard power and soft power. For developing countries, it's all the more difficult to get the conversation going. And India fares pretty low in the influence it has globally. To understand this more, we have with us Dr. Vinay Sahasrabuddhe. He's been a member of parliament and is considered one of the foremost intellectuals of the BJP. But today the conversation is going to be more about soft power and whether India exercises it enough or not, rather than about BJP and her politics. Dr. Sahasrabuddhe, thank you so much for coming to the podcast. I'd like to begin with a topic which many people don't understand, which is soft power. Because you are from the BJP, a number of people will think कि BJP के बारे में पूछते हैं elections, कहाँ जीतेंगे, कहाँ हारेंगे, क्या होगा. लेकिन मैं सिर्फ सॉफ्ट पावर पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोगों के ओपिनियंस बड़े हैं, लेकिन इट्स कंफ्यूजिंग कि सॉफ्ट पावर आखिर होता क्या है और इसको कैसे एक्सरसाइज किया जाता है और क्यों करना चाहिए. तो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड हमें बता दीजिए. सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपने इस बहुचर्चित पॉडकास्ट पर हमें निमंत्रित किया. इट्स एन ऑनर टू बी हियर एंड टू बी रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चंस. And the subject that you have chosen to start with, which is about soft power, is also very, very important, because post-Cold War, as I understand as a student of international relations, दुनिया का जो मानचित्र बदला है उसमें ज्योग्राफिकल स्पेस ऑक्युपाई करने से भी माइंड स्पेस ऑक्युपाई करने को ज़्यादा महत्व प्राप्त हुआ है. और इसलिए एक कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के डायरेक्टर थे, बड़े मशहूर शिक्षाविद एक दृष्टि से, जोसेफ ने,
he had written a book on soft power, which was the first kind of a seminal work on the concept of soft power. And that was about 20 years before, in 2004, the book came. And a little before that, the discussion around soft power also got around. I mean, it started. मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट पावर की कंसेप्ट आने के बाद ही सॉफ्ट पावर है, ऐसा तो नहीं है. दुनिया में सॉफ्ट पावर थी. जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि भारत कहाँ है, ये खोजने के लिए पहले कोलंबस और बाद में वास्को डी गामा निकल पड़े. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कि भारत से जो स्पाइसेस का सप्लाई होता था वो उस युद्ध के कारण समाप्त हुआ था. उसमें रोड़े अटकने लगे. तो उनको लगा कि लेट अस गो, लेट अस फाइंड आउट, लेट अस लोकेट वेयर इंडिया इज. और इस भूमिका से, इस उद्देश्य से दोनों निकले. अभी स्पाइसेस क्या है? इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया सॉफ्ट पावर. क्योंकि भारत पहचानने से भी पहले लोगों ने हमारे स्पाइसेस की खुशबू को पहचान लिया था, उससे वो मोहित हुए थे. ये वास्तविकता है. इसी तरीके से हमारे रामायण महाभारत, भारतीय लोग शायद बाद में पहुंचे होंगे, मगर सुदूर जापान तक एक दृष्टि से, और ये सारा मलेशिया, इंडोनेशिया, सारा ही कोरिया है, यहाँ तक रामायण महाभारत पहुँचे थे. तो इसका मतलब ये है कि सॉफ्ट पावर इज बेसिकली अबाउट, I mean, I am not going into the dictionary meaning of the term soft power or the definition of soft power, which is not required, because in a way it is very understandable कि हमारा जो मन मस्तिष्क पर प्रभाव होता है, जो नॉन कोअर्सिव होता है, जिसमें मिलिट्री का कोई संबंध नहीं है, न कि आर्थिक संप्रभुता का, मतलब आर्थिक ताकत का कोई संबंध है, मगर आपकी संस्कृति के माध्यम से, आपके संगीत, आपके नाटक, आपके महाकाव्य, आपकी जायकेदार मसालों की, या कुल मिलाकर आपकी कुलिनरी और क्यूजीन ट्रेडिशंस की खुशबू, आपका आर्किटेक्चर, आपका सिद्धांत, आपके तत्वज्ञान, आपकी फिलॉसफी, इन सब का जो परिणाम है, दैट क्रिएट्स सॉफ्ट पावर. एंड दैट हेल्प्स यू मेक योर कंट्री, योर सिविलाइजेशन, योर कल्चर understand the global community in a much, much better way. And there are no boundaries of political and geographical or physical boundaries for the soft power to reach a destination. Not at all. And I'll cite an example, and I'm sure many of the viewers and maybe yourself as well must have visited Beijing. When I first visited Beijing, I realized that perhaps I'm in a Mandarin America. In the sense, except for the language, everything is Americanized. You come across the same Kentucky Fried Chicken and McDonald's and whatnot. Similarly, if I may take the other example, which is that of Israel. When I went to Tel Aviv, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हिब्रू अमेरिका में हूँ. भारत में यह अनुभव नहीं आता. और विश्व के कई ऐसे देश हैं जो अपनी अस्मिता, अपनी आइडेंटिटी, अपने परिचय को बरकरार रखे हुए हैं. यहाँ तक कि अपनी लैंग्वेज को भी. चाइना ने, इजराइल ने लैंग्वेज को तो बरकरार रखा, मगर बाकी कलेवर आप देखेंगे तो एक अमेरिकनाइजेशन की जो एक बड़ी लहर आई हुई है पूरे विश्व में, उस लहर का वो हिस्सा बनते हमें दिखाई देते हैं. तो अपनी पहचान को बरकरार रखना, ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है. और उस दृष्टि से देखें तो इसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है. अभी चाइना और अमेरिका में क्या मतलब पॉलिटिकल तो राइवलरी है एक दृष्टि से. बावजूद इसके अमेरिका का प्रभाव चाइना में है, और शायद चाइना का भी कुछ मात्रा में अपने अपने. तो क्या अट्रैक्शन था अमेरिकन सॉफ्ट पावर का कि बिना मिलिट्री पावर या बिना हार्ड पावर एक्सरसाइज किए उनका सॉफ्ट पावर इतना अट्रैक्टिव है कि बहुत सारे देशों में वो सॉफ्ट पावर एब्जॉर्ब हो गया इन द लोकल कल्चर? Because of their very smart marketing tactics in a way. संपन्न देश है तो एग्रेसिव मार्केटिंग करना, अपनी चीज़ों को और आगे बढ़ाना, उनको फैशन का हिस्सा बनाना. और आज हम देखेंगे तो नैरेटिव चलाने वाले जितने सारे सोशल मीडिया है, वो भी तो एक दृष्टि से अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में है. तो वो अल्गोरिदम्स वगैरह की जहाँ तक बात आती है, वो भी एक था, मगर उससे पहले से भी है. ये तो मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा हूँ. हॉलीवुड की जो फिल्में हैं, बिल्कुल, हाँ, जो हमारी जनरेशन सब जो जिस पे पले थे, बड़े थे, सो दैट वाज दैट एस्पिरेशनल इंडिया और एस्पिरेशनल यूरोप और व्हाटएवर वांटेड कि वो डिज्नी की टी शर्ट्स पहने या फिर वो वहाँ के एक्टर्स की तरह लुक
walk. In a way, people kind of equated the idea of prosperity with the idea of America. जी. ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आ गया. वो सही गलत ये एक बात अलग है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का संबंध केवल आर्थिक संपन्नता से नहीं जोड़ना चाहिए. एक लाइफस्टाइल. हाँ, एक लाइफस्टाइल है, बहुत साधन सुविधा है, एक दृष्टि से ईज ऑफ लाइफ भी है कुछ मात्रा में. तो उसका एक आकर्षण बन गया. और मतलब लोगों को वो अमेरिका नाम का जो एक मन पर परिणाम निकल कर आया, हम देखते हैं कि कई पीढ़ियां एक दृष्टि से उस प्रभाव से निकल पड़ी, और आज भी वो बहुत ज़्यादा बाहर आई है, ऐसा शायद हम नहीं कह सकते. तो सॉफ्ट पावर जो है उसका इन्फ्लुएंस क्या क्या होता है? मतलब कि फॉरेन पॉलिसी पे होता है, डोमेस्टिक पॉलिसी पे होता है, किन चीज़ों पर सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? आई थिंक इट इज़ मल्टी डायमेंशनल. क्योंकि जब लोग एक देश को, एक समाज को, उसकी भाषा को, उसकी संस्कृति को जानते हैं और उसमें कुछ आकर्षकता हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप में एक अपनत्व भी बन जाता है. अभी मैं अगर भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ के बिग फैट वेडिंग्स जिसकी बहुत चर्चा होती है, आज मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में जितने सारे वेडिंग्स होते हैं, अमीरों के होते हैं, उसमें हमारे राजस्थान के कलाकार, चाहे वो कालिया बेली वाला वो डांस है वो करने वाले होंगे, या लोक कला, लोक कथा, लोक नृत्य कहने वाले, लोक वादक है, इनको बुलाया जाता है. और इन लोगों ने, यू मे नॉट बिलीव, इन्होंने फ्रांस में अपने बंगले बनाए हैं हमारे राजस्थान के लोक कलाकारों ने. Why not? हाँ, तो ये प्रभाव है. तो बिफोर इवन इंडियन डिप्लोमेसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स एंड एनीथिंग रीच्ड आउट देयर, our kalakars, our artists, our artisans for that matter, have already reached there. आप फ्रांस की बात कर रहे हैं, मैं एक प्यू रिसर्च कोट करती हूँ. उसके मुताबिक 68% इंडियन अडल्ट्स बिलीव दैट इंडियन इन्फ्लुएंस हैज़ रिजन इन द वर्ल्ड, बट ओनली अ मीडियन ऑफ 28% adults across 19 other countries in the world think so. So Indians think that we are doing very well in projecting our soft power, लेकिन काफ़ी सारे मुल्कों में, 19 countries में, people don't believe it. For example, 70% of adults surveyed in France, India's closest strategic partner in Europe, expressed positive views of India in 2008. But only 39% of French adults have the same positive views in 2023, a drop of 31 percentage points in 15 years. लेकिन आप कह रहे हैं that there is an increase. Maybe it is not reflected in this, but there seems to be a perception that India is not doing enough for its image. I'll explain. This is a wonderful question, and I must respond to it because it will also help me explain as to what exactly are we lacking and where do we lag behind. देखिए, सॉफ्ट पावर का मतलब केवल आकर्षण नहीं है. भारत के प्रति आकर्षण तो बेहद है. मैं कहूँगा कि जो भारत में आता है ना, भारत के साथ एक मोहब्बत हो जाती है. दे फॉल इन लव अनमिस्टेकेबली विथ इंडिया. द कलरफुल कल्चर ओवर हियर, the apparels that we use, our festivals, even our culinary cuisine traditions. Name a particular thing and it has attracted people from all over the world. But attraction is one thing and understanding is different. तो हमें चाहिए कि हमारे प्रति जो आकर्षण है उसको हमें हमारे भारत की संकल्पना, आइडिया ऑफ इंडिया के आकलन में तब्दील करना चाहिए. Unless and until you convert this attraction, this goodwill that India enjoys into a proper understanding of what India is all about, we cannot say that the soft power has been accrued to our account. ये वास्तविकता है. और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, but there is certainly some role played by the media and the academia. Okay. आज वॉशिंगटन टाइम्स और न्यूयॉर्क वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जिस पद्धति से भारत की एक छवि बनाते हैं और जो वास्तविकता है, इसमें बहुत अंतर है. और ये आज का नहीं है. 20 years before, let me tell you, there was a seminar and Sushant Gunatilake, one of the very renowned social scientists from Sri Lanka, has mentioned it, that in South California University, there was a seminar. And you know what was the subject of the seminar? Bride burning and son preference traditions in India.
कैन यू इमेजिन? इस पद्धति से हमारी संस्कृति को बहुत ही बेहुदा तरीके से और बहुत ही अभद्र तरीके से अगर प्रस्तुत करने वाला एक एकेडमिया है, और विशेष रूप में अमेरिका में या यूके में या यूरोप में है, तो हमें तो मतलब दुगुनी ताकत से इसको डिमोलिश करने के लिए काम करना पड़ेगा. But there was, I mean, the point is that है ना हमारे देश में. No, but this was never a part of our tradition. No, it How wasn't. can you? How can you describe it that it is a part of our tradition? And tell me, son preference, I mean preference for a male child, ये दुनिया में कहीं कहाँ नहीं है, मुझे बताइए. सब जगह है. ब्राइड बर्निंग, ये कोई ऐसा थोड़ा ही है कि देखो ब्राइड, जैसे ब्राइड आ जाती है तो उसको बर्न करते हैं. आर यू टेलिंग अस लाइक दैट? मतलब दिस इज द हाइट ऑफ परवर्शन. और इसको तो मतलब हमने बहुत कड़ाई से इसको ध्वस्त करने की जरूरत है. दुर्भाग्यवश हमसे वो हुआ नहीं, और आज हम कर रहे हैं इसको. और It is जैसे true. कि आज भी अगर हम देखें तो the headlines which come out is or till 10 years ago it was rape capital of the world. Correct. Now it is obesity capital of the world, diabetes capital of the world. मतलब these are terms which are attached and crime, pollution. These are things which get attached to the name India. But there's more to India is what you're saying. एब्सोल्युटली. और अगर आप जनसंख्या के अनुपात में यहाँ के क्राइम और बाकी सारी गलत बातों का अगर रेशियो देखेंगे, तो बाकी सारे जिनको जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं उनसे तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं. इतनी सारी मतलब आबादी होने के बावजूद भी ये देश बहुत अच्छे तरीके से चलने की कोशिश होती रहती है, और कमोबेश वो सफल होती रहती है. इसको तो विश्व के मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लोग भी बड़ा मतलब बड़े अचंभित हो जाते हैं और बड़ी सराहना भी करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिस्टम्स चरमराई गई है, चलता ही नहीं कुछ. ऐसा होता तो वो गीत शायद वो गाता नहीं था कवि की, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी. तो वो तो है ना, हमारी जिजीविषा है, हमारी संघर्षशीलता है. आई वॉज देयर इन जर्मनी सम टाइम बैक, मे बी सम 5-7 years बिफोर. तो वहाँ का एक छात्र जो भारत में आया था, he was telling me that originally I had come only for 3 weeks, but later on I extended my stay for about 2 months. Then I asked him about his impressions, and he was all negative about the impressions. I mean, people breaking the traffic signals, and then so many people at one time on the streets, and the litter everywhere, all kinds of things that you can imagine, he was telling me. तो मैंने पूछा कि इतनी नेगेटिव कल्पना है आपके मन में भारत के बारे में, तो फिर भी आपने अपना स्टे एक्सटेंड क्यों किया? तो विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस ही सेड कि सर, इफ़ यू मूव अराउंड यूरोप, आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ के लोगों की आंखों में कोई रोशनी नहीं है. भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति की आंखों में एक आशा की किरण है, एक रोशनी है, एंड दैट इज इंडिया. तो ये जो हमारे समाज की ताकत है, अंतर्निहित है, इनहेरेंट टू आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी, दैट हैज केप्ट अस मूव फॉरवर्ड. इसको हमें समझाना पड़ेगा. ये अपरेंटली समझ में नहीं आएगी. Is that something to be appreciated, that there is hope simply because his daily life is such drudgery of the poor person on the streets? The only way to survive is through hope. I don't know whether it is a positive आप देख रहे हैं, और वो करे भी क्या? अगर होप नहीं है तो वो सर्वाइव कैसे करे? नो, बट ऐसी स्थिति विश्व के कई समुदायों में है, मगर वहाँ होप नहीं है. यहाँ होप इसलिए है क्योंकि यहाँ श्रद्धा है. यहाँ जो मंगल है, जो अच्छा है, जो शुभ है, उसके प्रति एक श्रद्धा है. देखिए, ये देश जीवंत रहा है, चलता रहा है. यहाँ की सिविलाइजेशन सदियों से, सहस्राब्दियों से चलती रही है, तो इसका कारण श्रद्धा है. आई एम श्योर पीपल हैव रेड अबाउट Mark Tully's book, No Full Stops in India. And there he has very beautifully mentioned this, that the Western elite and their counterparts in India generally try to, I mean, I'm telling the substance of what he had said. I'm not quoting him per se, but he has beautifully said that the Western elite and their counterparts in India try to rush to draw the conclusion. And instead of raising the consciousness of the common people and taking it to higher and higher level, they try to draw conclusion, put a full stop in a land where there are no full stops. Right. So let's come to the
aspect which you were talking about, Shraddha, culture, all these things, Vasudhaiva Kutumbakam. Now, that is a key feature of Indian superpower. It was also mentioned by the Prime Minister recently in G20. Explain that term and how that term was used during G20 and how it is used in Indian foreign policy. See, in a way, when we decided to have that motto, Vasudhaiva Kutumbakam, in English it was loosely translated as one earth, one family, one future. And very rightly so. I mean, nobody can deny it, although there were, I am told, some countries had some reservations about the motto itself. But then nobody could voice their opposition because, I mean, how can you disagree with the fact which has been stated over there? That is as simple as that. तो इसका मतलब ये है कि ये विश्व समुदाय को एक एहसास दिलाने की बात थी कि वी कैन नॉट लुक एट द ग्लोबल कम्युनिटी इन ए डिसजॉइंटेड मैनर. किसी भी देश में कुछ भी होता है तो उसका पूरे विश्व समुदाय पर परिणाम हो रहा है. चाहे यूक्रेन और रूस के संघर्ष की बात करें या अभी जो इजराइल और हमास के बीच चल रहा है उसकी बात करें. तो इसका उसी पे मैं पूछना चाहती थी कि इन सच अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड टुडे, वेदर इट इज यूक्रेन और वेदर इट इज इजराइल हमास, वहां पे कहाँ आप यूनिटी देखते हैं? नो, दैट इज आवर प्रिस्क्रिप्शन मैम. ओके, ये हमारी धारणा है कि इस भाव से ही काम करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर गो एब्सोल्युटली, unless and until we realize deep down in our minds and in our thinking that we are one world, we are one family because we have one common future. अगर इस भाव से हम नहीं काम करेंगे तो हम सभी का जो एक समुत्कर्ष होना चाहिए, जो एक अभ्युदय होना चाहिए, उससे हम मीलों दूर ही रहेंगे. Because most countries think like that. No, me and mine. मैं, मेरा क्या? India never. देखो, मैं अभी हमने यूनाइटेड नेशंस में इसी थीम पर एक कॉन्फ्रेंस की सम मंथ बिफोर. तो उस कॉन्फ्रेंस का भी यही थीम था और उसमें हमने कहा, जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल्स आफ्टर एग्जांपल्स, बट व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल पीस कीपिंग, यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस है, उसमें सबसे तगड़ी, सबसे जिसको मैं कहूँगा कि सब्सटैंशियल ऐसी अगर किस देश की कामगिरी है, किस देश का अगर उसमें योगदान है, तो वो भारत का है. कहीं भी उधर लीबिया में या अन्य मध्य पूर्व के देशों में जब जब संघर्ष हुआ, लोग अटक पड़े, तो अमेरिका ने भी हमारे लोगों को कहा, भारत सरकार को, सुषमा जी हमारी मंत्री थी उस समय, कि क्या आपने लोगों के साथ हमारे लोगों को भी रेस्क्यू कर सकते हो? और हमने किया. सी, इंडिया हैज बिकम ए ब्रांड ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एंड नॉट फॉर नो रीजन. टेक द एग्जांपल ऑफ COP27. भारत सरकार ने ये भूमिका ली कि बड़े जो अमीर देश है वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए और उसकी भरपाई करने का काम आप डेवलपिंग कंट्रीज पर छोड़ दे. ये नहीं चलेगा. वी आर स्मॉल कंट्रीज परहैप्स, वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, नो मैटर, बट देन यू कैन नॉट जस्ट पुट द ओनस ऑन अस एंड यू डू एनीथिंग इररिस्पॉन्सिबली, विच इज व्हाई द प्राइम मिनिस्टर mooted the idea of lifestyle for environment. क्योंकि इनकी जीवन शैली जो है हमारे सो कॉल्ड अमीर विकसित देशों की, वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रही है. ओवर कंजम्पशन. बिल्कुल. तो ये बात तो हम ही ने तो कही ना. तो हमें चूंकि पूरे विश्व समुदाय को एक परिवार मानते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं. टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म. विश्व में अमेरिका जैसा एक मॉडल है, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म. दूसरा एक पुराना सोशलिस्ट मॉडल है, एक्सट्रीम कम्युनिटी ओरिएंटेशन या कलेक्टिविज्म. हमने उसका बीच का रास्ता अपनाया है. वी अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल. हमारे शास्त्रों ने कहा है, प्राप्ते तु षोडश वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत. व्हेन अ बॉय और अ गर्ल अटेन्स द एज ऑफ 16, द पेरेंट शुड ट्रीट हिम और हर नॉट एज सन एंड डॉटर बट एज अ फ्रेंड. दिस इज आवर way of approaching towards individual identity, individual space, privacy, individual choice. But you cannot stretch it too far. After all, we are a part of a whole. हम एक परिवार के अंदर रह रहे हैं, इसका तो एहसास रखना ही पड़ेगा.
तो ये जो भारतीय संस्कृति की जो एक सैद्धांतिक नींव है, आवर फाउंडेशनल वैल्यूज़, मैं पार्लियामेंट में था और लोग जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनको पता है कि वहाँ पर स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, दैट इज़ द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। आज जो भी विश्व में चल रहा है कि मैं ही श्रेष्ठ, आइडिया ऑफ सुप्रीमसी, हमने कभी उसको प्रश्रय नहीं दिया। We said ekam sat vipra bahuda vadanti, which is spiritual democracy. But then this idea of spiritual democracy will have to be accepted by one and all. What does the term spiritual democracy mean? Spiritual democracy means, like in democracy, every other individual is equal. So in spiritual democracy, every way of worship has an equal standing. There is no monopoly, there is absolutely no hegemony. We never say that my way or highway. हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे रास्ते से जाएंगे वही ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे, बाकी है वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे, बिकॉज दे आर इनवैलिड। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने तो कंकर में शंकर देखा, जैसे अटल जी ने बहुत अपने प्रसिद्ध वाक्य में कहा। तो ये जो धारणाएं है, ये जो श्रद्धा है, इसके कारण हम वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करने के अधिकारी बन जाते हैं, because we have lived this philosophy. I'm going to come to the part of, spiritual democracy again. But before that, what we were talking about, the image of India abroad. So some of us who've got friends and cousins who went in the 70s, he went in the 80s. And they used to always be embarrassed about when people would say, अच्छा तुम यहाँ पे आए हो रहने के लिए, हाँ तुम्हारे कंट्री में गरीबी इतनी है, you come from an underdeveloped nation. Today the same NRIs turn around and feel proud that India has achieved so much, whether it is Chandrayaan, whether it is any other sphere. I don't even want to start listing the achievements, but there is a sense of pride. There are also many Indians who want to come back and be part of the India story. Now, is that solely because India has become economically a strong nation, or is it a combination of that and India's soft power? It is a combination, beyond doubt, because the way we have asserted under the leadership of Prime Minister Modi, whether it is paying our neighboring country, Pakistan for example, in their own coins, teaching them a lesson, not allowing them to just do any mischief with us and get away with it. ये जो हमने किया है, एक दृष्टि से हमने पराक्रम का परिचय दिया है। चांद्रयान वगैरह सारे विषयों को अगर मैं देखूं तो हमने प्रतिभा का भी परिचय दिया है। तो पराक्रम है, प्रतिभा है, हमारे परिश्रम भी है। पूरे कोरोना काल में हमने क्या देखा? परिश्रम ही तो देखे। हमने जिस पद्धति से वैक्सीन मैत्री स्थापित की है, क्या इस पर किसी को नाज नहीं होना चाहिए? तो इसके कारण हमारे एनआरआई बंधु, हमारी बहनें अब गर्व का अनुभव कर रही है। तो जब नेतृत्व इस पद्धति से अनअपोलोजेटिकली, और ये इसमें कोई नया नहीं है, ये तो हमने करना ही चाहिए था। पीएम साहब ने एक बार जापान में जाते हुए कहा था कि मैंने वहाँ के राजा साहब को भगवद गीता की एक प्रति दी, और वहीं जापान में भाषण कर रहे थे। तो मुझे पता नहीं भारत में अब लोग मेरे ऊपर आलोचना करेंगे या क्या करेंगे, बिकॉज दैट हैड बिकम अनफॉर्चुनेटली आवर नेशनल हैबिट टू डिनाई आवर पास्ट, टू डिनाई आवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। ये जो निगेटिविज्म था, कोई जरूरत नहीं, अरे हम है ना भाई, क्या आपत्ति क्या है? हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी है। अभी ये सनातन धर्म के ऊपर इतना सारा कर रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं कि ये सनातन का मतलब ही शाश्वत है। द लिटरल मीनिंग ऑफ सनातन इज इटर्नल। तो सनातन कोई केवल एक उपासना पद्धति का नाम थोड़ा ही है। वॉट एवर इज इटर्नल इन दिस वर्ल्ड, इट्स सनातन। मगर वोट बैंक की राजनीति में करने लगे जैसे जो मन चाहे। Because the idea is that the BJP with its idea of Sanatan and with its idea of spiritual democracy is trying to bring about a Hindu Rashtra in this country. Now this is the narrative which one gets to read in the foreign media. Where does the foreign media pick it up? It picks it up from parts of the Indian media and the Indian academia also. जो ये बात start करते हैं, जो बात बोलते हैं, और वो foreign media pick करती है। तो कहाँ पे, where is the falsification in all this? We have not been able to communicate what we are. I mean, I will certainly start by looking into the mirror and turning the searchlight inward in a way. But at the same time,
not all the misperceptions are a creation of our own inertia. Some of the misperceptions are wantonly generated by people who are interested in a way, tarnishing the image of India and bringing a bad name to the idea of India. And there are many. There are many. अभी कई म्यूजियम्स में देखता रहा हूँ, मैं जाता हूँ, तो एक म्यूजियम में मैंने देखा कि इंडिया इज द होम ऑफ सेवरल वेज ऑफ वर्शिप एंड देयर आर टू प्रोमिनेंट स्ट्रीम्स, one is Hinduism and the other one is Brahmanism. What kind of canard are you spreading? And who is to contest this, if not we? How can you call Brahmanism a That is what I am saying. मगर ये कनार्ड फैलाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी विविधता को विभाजन का आधार बनाने की कोशिशें हो रही है. एंड वी हैव बीन सेइंग कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, दैट इज जस्ट, एंड लेट मी रिपीट, दैट इज जस्ट द diverse manifestation of our innate unity. We are first united, and then that unity gets manifested in diverse way, which is why it is not just unity in diversity, but unity of diversity. ये हम समझाने में जितने सफल होने चाहिए शायद नहीं हो पाए. पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण हो सकता है, कई बार विभाजन के आधार पर वोट बैंक को बनाने की जो कोशिशें होती है उसके कारण हो सकता है. तरह तरह के कारण हो सकते हैं. तो कुछ डेलिबरेट और कुछ इनर्शिया. बिल्कुल, कुछ डेलिबरेट, कुछ इग्नोरेंस मैं कहूँगा. हमारी पार्ट पर इनर्शिया का भी एक हिस्सा उसमें है, जरूर है. तो ये अगर हम ठीक करते हैं और थोड़ा असर्ट करते हुए एकेडमिक कम्युनिटी को बोलते हैं कि what you are saying is far from the facts, and we also through research, rigorous research, establish it very powerfully, then I'm sure we will be able to contest such misperception creators. You know, with relation to Hinduism, we'll get to there, but I also want to talk about, like you said, Hinduism and there is the Brahminical way, there is the Sanatan. There's also the Buddhist circuit. India is a land where Buddha attained enlightenment. The Dalai Lama got refuge in India when he faced persecution. Now, yet when you talk about Buddhism and Buddhist destinations, when you talk to anybody in the world, they'll say Thailand, they'll say Japan, they'll say Sri Lanka. Rarely do they talk about India. हाँ, हमने अभी बुद्धिस्ट सर्किट का कर लिया. We inviting people from Southeast Asia. It's been going on for almost 10 years now. But why is it that it doesn't strike people in the world still? Again, inertia on our part. I mean, the previous governments were all very shy of talking about our spiritual traditions. Whether it was Jainism, whether it was Buddhism, whether it was Sikhism, whether it was Hinduism. I mean, simply it was all their hypothecated kind of way of thinking. एक इमेजिनेशन था कि अरे हम इतनी बात करेंगे तो उनको क्या लगेगा, जिसका कोई मतलब ही नहीं था. हमारे प्रधानमंत्री जैसे अब कर रहे हैं कि इजराइल को भी साथ ले जा रहे हैं, पैलेस्टाइन के साथ भी मित्रता हमारी कायम है, हम कर सकते हैं. मगर हमारे देश के कुछ लोगों को क्या लगेगा, इसलिए आप इजराइल से मित्रता ही नहीं करोगे, इसमें कौन सी विजडम है? नहीं, पर बुद्धिज्म से किसको तो मैं थ्रेट हो कह रहा सकता हूँ, था? नहीं ना, मगर कुल मिलाकर हमारे देश की अस्मिता से जुड़े हुए ये चार धाराएं हैं: हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. Religions that originated from India. इंडिक रिलीजन्स, Indic religions, इंडिक ट्रेडिशंस में कहूँगा. इनके बारे में दुर्भाग्यवश हमारे देश में पुराने समय में कोई असर्शन ही हुआ नहीं. कोई उसके बारे में जो भी उसकी गुणवत्ता है, जो भी उसका योगदान है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, गुरु नानक हो, इनके बारे में जितने अच्छे तरीके से हमने विषय को प्रस्तुत करना चाहिए था, हमने किया नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आसियान वॉज एन एरिया जहाँ पे जब समिट्स होती थी, वहाँ पर हमारे बुद्धिस्ट सर्किट को बहुत ज्यादा, वी शुड हैव गिवन इम्पोर्टेंस, वी शुड हैव स्ट्रेस्ड ऑन दिस इन ऑल दोज आसियान समिट्स. In the 72-year history of Indian Council for Cultural Relations, which I am heading these days, it was for the first time that we could have a Buddha Bhumi Vandana Yatra involving some 13 countries and 30 delegates who were all young Buddhist scholars.
अभी हम बुद्धिस्ट स्टडीज में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ऐसे स्कॉलर्स को डेकोरेट कर रहे हैं। ये तो बरसों पहले करना चाहिए था जी। अभी हिंदू बुद्धिस्ट डायलॉग हुआ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, भारत सरकार का संस्कृति विभाग, इनके माध्यम से, तो कभी मंगोलिया से, कभी थाईलैंड से हमारे डायलॉग उस स्पिरिचुअल धारा में भी चल रहे हैं। व्हाई शुड वी बी शाय अबाउट इट? And ICCR also does and has been doing for quite some time, Indian Council for Cultural Relations, which you head, about how Ramayana is linked. Yes. तो उसके बारे में वही है, मतलब good that you raise this subject because I have a particular example to share with you. See, after 2015, ICCR has been engaging itself in conduct of Ramayana Festival, which is an international festival, and we invite troops from all those countries where Ramayana is a part of their tradition. तो उसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बहुत सारे देश हैं। उसमें ब्रुनेई भी आया एक बार। तो ब्रुनेई से कोई आएगा हमें लगा नहीं था। हमारे जो अधिकारी काम कर रहे थे उनको लगा कि 100% इस्लामिक है, अनलाइक मलेशिया और इंडोनेशिया। सो दे वर ए लिटिल सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज. And during the recess, when the Brunei troupe presented a wonderful skit on the theme of Jatayu Vadha, which is an important story as part of Ramayana, तो जब बातें हो रही थी कि हमें तो लगा नहीं था कि आपके यहाँ से कोई आएगा, तो ब्रुनेई के उस कला पथक का जो प्रमुख था उसने कहा कि बॉस, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन, नॉट आवर कल्चर. मगर इसका हमें एहसास ही नहीं था. हम तो बेकार का इन लोगों को क्या लगेगा, उन लोगों को क्या लगेगा, इसी कवायद में अटके रहे. Why is that just brings me? Why is Jatayu such an important figure? I know. In Southeast Asia. मैंने वहाँ इंडोनेशिया में भी देखा, बाली में भी देखा है. Jatayu is very significant, and in India. Not many people, if I was to take a camera right now and go and ask कि Jatayu कौन है, not many people will know, frankly, you know, a figure from Ramayana who people have mostly forgotten. And when you go to these countries, you realize that there are so many parts of Ramayana and of Mahabharata which these fables have got lost. You know, why Varuna is not seen, you don't see temples or you don't see idols of Varuna at all. You know, in India. Whereas in these countries, Varuna is very much worshipped. Jatayu is worshipped. There are big figurines. So it's interesting. Yeah, it is interesting and requires, it merits deeper research why there is so much of kind of love and affection, and not just love and affection but reverence for the story of Jatayu and the kind of struggle he waged against Ravana, for that matter, in his bid to save Sita or to rescue her for that matter. तो ये बिल्कुल मतलब, क्योंकि हमारे कंट्री में क्या होता है, इंडिया में एक नरेशन होता है जो रामायण और जो महाभारत का इंटरप्रिटेशन लार्जली नॉर्थ में होता है, वो ऑलमोस्ट टिल सेंट्रल इंडिया वैसे ही होता है, विद माइनर चेंजेस एज यू गो फर्दर साउथ, और इफ यू गो ईस्ट a little more towards Shakti worship, you know, a little more towards Mother Goddess, towards Western India. ये सब होता है थोड़ा बहुत. But certain stories have completely got lost. Like I still remember in Vietnam there was this large urn, और उसमें एक उधर था, and I just looked at it and I said, oh, it looks like you know, the marriage procession of in Ramayana or something like that. It looks like the Ram Sita, and you can see all that. So then they said, see that and look under that. So I looked under that. I said, वो तो वही लग रहा है. Said, no, that is Shiva Parvati. Oh, really? And it is the wedding of that. So I said, एक में आप शिव भी और राम, you don't see that in India all that much. You don't see both the gods in one figurine. Correct. So they said what happened was that the carvers were brought from India. They were going to be there for 4 years or 5 years during the process of when the temple was going to be constructed. In that 4 or 5 years, they didn't restrict themselves कि ये विष्णु टेम्पल है तो हम विष्णु ही लगाएंगे, या ये शिव जी का एक मंदिर है उसमें सब कुछ आ जाता था. नहीं, वो तो है. और हमारे यहाँ इंटीग्रेशन भी है ना, मतलब हमारी आस्था में, हमारी श्रद्धा में, in our ethos, both the things are so very intertwined that although both the epics are in a way different, period wise also they are in different brackets. Yeah, exactly. But still, in our consciousness,
Yeah. they are somehow brought together. Yeah. That has happened. I mean, And for also example, the way Shiva is depicted, the Ishana element Yeah, of yeah, it, you know, the long hair and the mustache, and very different from, and it's that Rudra and that aspect of Shiva, which you see in, say, in the Korean temples, which you see in the Japanese temples, which you see in Indonesia. It's completely different from what you True, see true, in most of the Indian temples in central India. Very that is interesting. true. Yeah, yeah. These are different interpretations and different perceptions also Yeah, in a way. and then to come back to the Ramayana circuit which you were talking about, so when you see Ramayana depicted on stage, say in a Manipuri style, or if you go further in a Vietnamese style, you go further, even Korea for that matter. In fact, if you could even Yeah, yeah, tell yeah, yeah. Korea's connection with Right, Ayodhya, right, that also right, is a very right. बिल्कुल interesting. बिल्कुल बिल्कुल Yeah. तो अयोध्या और कोरिया का कनेक्शन और वहाँ की महारानी के संदर्भ में जो भी मतलब हमारे यहाँ भी जानकारी है, वहाँ भी जानकारी है, लोगों में अपार श्रद्धा भी है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसलिए इन सारी चीज़ों के आधार पर एक मिला जुला भाव विश्व जिसको हम इथॉस बोलते हैं वो बना हुआ है। एंड देयरफॉर मेनी टाइम्स इट comes to my mind that we have several groupings like G20, G70, G this, G that, and maybe BIMSTEC and SARC and whatnot. Perhaps we can also float another grouping which is Rama and Mahabharat countries. Because there are so many countries that are linked to the stories of Ramayana and Mahabharat. You will not believe I was in Baku few years before, which is the capital city of Azerbaijan. And right in the outskirts of the capital city of Baku, there is a fire temple. और वो मैं देखने के लिए गया Parsi fire temple. नो 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 इट इज़ हिंदू फायर टेम्पल। Okay. और कहानी बताते हैं कि दक्ष और सती इनके बीच जो भी हुआ और सती के टुकड़े टुकड़े करके उनको इतस्ततः एक दृष्टि से फेंका गया, तो उसमें सती के अंग का एक भाग, एक हिस्सा बाकू में गिरा। Like a Shaktipeeth. तो वो एक शक्तिपीठ माना जाता है और वहाँ पर बीचों बीच अग्नि मंदिर है और जो चार दीवारी है उसके ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनियों के चित्र भी है, वक्रतुंड महाकाय इंस्क्राइब किया हुआ है, सर्वकोटि गणपति है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Nobody would have imagined that In the Baku. message of, in a way, Indian scriptures has gone right up to Baku. Even in Trinidad and Tobago, Yeah. the indentured workers who went, or to South Africa, they have their Ramayan part which Yeah. happens and things like that. So these are connections in. So I'm of course going to come, so that, you know, there is also a view that which you were talking about when you spoke about Brunei, that when it comes to ICCR, when it comes to you know, government bodies which promote Indian culture, it tends to be the Hindu culture. There is also a Parsi culture, there is a Buddhist culture, there is a Sikh culture, there is an Islamic culture, very thriving minorities and their religion. Is there enough done to promote that aspect also in rest of the world? Yes, yes, of course. For example, जब गुरु नानक जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया, तो विश्व भर के युवा सिखों की एक हमने यहाँ पर एक यात्रा, तखत दर्शन यात्रा आयोजित की थी और उनका 2 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया कि सिख गुरुओं ने इस देश के लिए क्या किया है, विश्व समुदाय के लिए क्या किया है, वो उनको बताने का काम। एंड लेटर ऑन वी टुक देम टू अमृतसर, टू पटना साहिब, टू नांदेड़, and everything was done by ICCR. Similarly, I already have spoken about the Buddha Bhumi Vandana Yatra, which is also a part of our culture, and therefore that requires to be projected, that requires to be talked about. When it comes to Islam, सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में विशेष रूप में हम ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि बाकी सारी बातों में विश्व समुदाय में काफ़ी आकलन है, चर्चा भी है, बट सूफ़ीज़म एंड सूफ़ी म्यूज़िक essentially is something which has a stamp of India. Tell me what is different about Islam in India as compared to Islam in the rest of the world? If you can club rest of the world in one grouping. Well, I would only say, if not 100%, because I am not that way